Hi guys, hello everybody. Hello. Um again, so it's 8-9, but obviously it's like a ritual now. We will wait for some time, maybe 2 or 3 minutes, so that other people, if they're joining, they can join. Until then, I will tell you कि हम आज क्या plan मतलब what I have planned today to do. So, as I said yesterday that we are gonna do a topic that I'll let you guys know, and we will do questions. So today I did not get time to put questions in the PPT. So आज हम response sheet से questions करेंगे, and you'll also get to know how does a response sheet looks and what exactly is a response sheet and what happens after you give your CUT exam, how do you get your results and stuff like that. And also for the topic, I have thought to do biotech का स्टार्टिंग से. सो वी आर जस्ट गोना अंडरस्टैंड बायोटेक क्या होता है, एंड उसी के बेसिस पे सम ट्रिवियल क्वेश्चंस आई कैन थ्रो हियर एंड देयर कि बताओ ऐसा क्या होता है. लाइक इफ यू नो इवन क्वेश्चंस लाइक इको R1 की पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस बताओ, दैट क्वेश्चंस लाइक दैट कैन आल्सो कम. सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. ठीक है. एंड यस, we'll wait for 2 minutes and we're gonna start at 8:12. Until then, you guys can tell me your preference if you want to do the topic first or the questions first. I would suggest कि पहले एक दो questions कर लो, फिर बीच में topic कर लो, and then उसके बाद एक दो questions और कर लेंगे. Okay, so should we start? Kajal says,
हाय जी, सीयूईटी का एग्ज़ाम हार्ड आता है क्या? आई एम अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, प्लीज़ बता दो हार्ड आता है क्या एग्ज़ाम? हाँ, थोड़ा सा हार्ड तो आता ही है। इट्स नॉट लाइक कि बिल्कुल ही ईजी होता है। आई मीन यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। इट्स सीयूईटी इज़ एट अ वेरी नेसेंट स्टेज राइट नाउ, सो हो सकता है कि अभी जो पिछले 2 साल में पेपर आए हैं वो बहुत ईज़ी होंगे, बट द नेक्स्ट पेपर्स दैट यू कैन बी लाइक इट कैन गेट हार्डर बाय टाइम, क्योंकि कंपटीशन भी बढ़ेगा ना। देखो जैसे अगर इस साल की हम बात करें तो इट्स सेट कि 26 लाख समथिंग रजिस्ट्रेशंस आए। सो अपार्ट फ्रॉम द पीपल हु आर अटेम्प्टिंग CUET for the first time, there are also partial droppers or the people who have already given first attempt of CUET and they're not satisfied with their course or the college that they've got. So there are a lot of people who are doing this again. So आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये हार्ड बन जाता है। जब हम बोर्ड्स की बात करते हैं ना, तो बोर्ड्स इतना हार्ड इसलिए नहीं होता क्योंकि उसकी कंपटीशन कम हो जाता है। एंड उसमें इट्स लाइक इट डजेंट मैटर कि आपके आगे पीछे लोग क्या करें, ऑल्दो कट ऑफ उसके हिसाब से निकलती है, बट उसमें आपको परफॉर्म करने के बेटर चांसेस होते हैं। एंड बट इफ़ वी टॉक अबाउट CUET, तो CUET में देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन। हाउ मच स्कोर इज नीडेड टू टेक एडमिशन इन DU? हाँ, देखो इट डिपेंड्स ऑन द कोर्स एंड द कॉलेज। तुम्हें DU का कोई भी कॉलेज मिल सकता है स्टार्टिंग फ्रॉम 500-600 out of 800, ठीक है। बट इफ़ यू वांट द टॉप कॉलेजेस, लाइक इफ़ यू आर अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट राइट, एंड इफ़ वी टॉक अबाउट पॉल साइंस हिंदू कॉलेज का पॉल साइंस इज़ द बेस्ट पूरे DU में। तो फॉर दैट यू एक्चुअली नीड 800 ऑन 800 भी कट ऑफ जाती है, बट दिस डिपेंड्स कोर्स टू कोर्स। पॉल साइंस की जाती है 800, बट देन हिस्ट्री की इतनी नहीं जाती। हिस्ट्री की थोड़ी सी कम जाती होगी, बट इतनी बहुत कम नहीं, ठीक है। सो DU में देर आर बहुत ज़्यादा वेराइटी ऑफ कॉलेजेस, तो यू कैन गेट बहुत प्रेफरेंसेस, बट इट डिपेंड्स कोर्स टू कोर्स एंड कॉलेज टू कॉलेज ऑनेस्टली। अब मैं ऐसे नहीं बता पाऊँगी इतना वेगली। BA प्रोग्राम, हाँ BA प्रोग्राम हिंदू में है। Okay, so anyways I'll have to start with the stream. um, हाँ तो before that I'll just introduce myself. I'll just give my quick introduction. So I am Aarushi Anand from Hindu College and currently I'm doing BSc Honors Zoology, and I gave my CUET exam in 2023 and I got 100 percentile in bio, psychology and English and 99.8 in chemistry and physics. So before starting, let's just see what is ExamFactor offering you. So they are offering you a mock test series. तो जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसमें दीज आर अवेलेबल फॉर द सब्जेक्ट्स अकाउंट्स, BST, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, फिजिक्स, केम, बायो, हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉल साइंस, साइकोलॉजी, इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट, ठीक है। दीज मॉक टेस्ट सीरीज यू कैन अवेल, and the reason for that is very simple. You need practice and mock tests will give you practice. And see the thing is कि हम PYQs अगर CUET के डिस्कस कर भी रहे हैं ना, तब भी क्या होता है कि जो CUET का एग्ज़ाम है वो सिर्फ 2 साल आया है,
and there are not a lot of PYQs which are available on the internet, but NTA ने हमें साफ साफ बताया कि there's gonna be a set pattern which is they're gonna give you MCQs. So जितना ज़्यादा MCQs और objective questions you're gonna practice, उतना ज़्यादा ही you will be at an advantage. Second thing is crash courses. So crash courses are available for all the subjects which are there on your screen, and simple reason for availing crash course is practice, sorry, revision. You need revision. So in the crash course, you will be offered one shot series, one shot video lectures for particular chapter in a subject. Like for example, एक चैप्टर आपको एक चैप्टर आपको बायोटेक का मिल गया, दूसरा चैप्टर आपको जेनेटिक्स का मिल गया, सो लाइक दैट. So revision, it's the two most important things, revision and practice. So जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे एंड जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ही यू हैव अ चांस टू एस अ कम्पिटिटिव एग्जाम. कम्पिटिटिव एग्जाम और रिटन टेस्ट या फाइनल टेस्ट ये अलग होते हैं. सो यू कीप दैट इन माइंड कि आपको कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, एंड उसके लिए रिविजन एंड प्रैक्टिस, both of these things will help you a lot. ठीक है. So as we said that हम PYQs करेंगे, तो चलो I'll show you a very interesting thing. I will show you the response sheet today कि how is a response, मतलब what is a response sheet and how do you get it. ठीक है. So this is a response sheet. Right. This is an exam sheet, as you can see. BCom honors in Hindu college. BCom honors in Hindu college would be, I think, देखो SRCC का कैप लग जाता है at 780, 780 something, 790, 780. तो हिंदू का कैप would be थोड़ा सा lower than that. So I'm assuming 770 से 780 के बीच में होता होगा हिंदू के लिए BCom honors. I mean, in any case, for Hindu, SRCC, Miranda, or even Hansraj and KMC, you guys need a good score to act, like come North Campus में. हाँ, तो if it's like that, तब आपको थोड़ा सा redemption मिलेगा, but ज़्यादा नहीं मिलेगा. For top colleges, even people with a reservation need a lot of marks. So for you, I'm guessing it would be 760s में, or 750, 760s. I don't think so. It's going to be less than that. Anyway, I was telling you guys how does a response sheet look. So this is a response sheet. So basically क्या होता है ना कि CVT वाले आपको ऐसे एग्जाम आंसर्स नहीं देते हैं कि ये आंसर है, ये आंसर है, एंड आप तो CVT देकर आए हो, है ना, मतलब क्वेश्चन स्क्रीन पे था, आपने पेपर दिया एंड पेपर ख़त्म हो गया, तो उसी कंप्यूटर उसी लैपटॉप पे दिया था एंड वो सिस्टम पे था, तो आपके पास कुछ रिटर्न रिस्पॉन्सेस की शीट तो आती नहीं है ना. तो फिर क्या होता है, सो आफ्टर यू गिव योर CUET एग्जाम, you can just you can just क्रॉस चेक योर आंसर्स कि मैंने क्या करके आया है. PST की लाइव क्लास आई थिंक स्टार्टेड ही है. हाँ, तो आपको याद तो रहता नहीं है कि आपने क्या किया है. सो व्हाट हैपेंस इज आफ्टर सम टाइम, ओके, सो मेरा स्कोर था 794 आउट ऑफ 800. सो दिस इज द स्कोर जो मैं जिससे मैं BA ऑनर्स कर सकती थी एज साइकोलॉजी ऑनर्स और समथिंग लाइक दैट.
And then for science, since I'm doing BSc zoology, तो I had the requirement कि मुझको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेना कंपलसरी था एंड मेरा सिर्फ उसी का मार्क्स लगना था आउट ऑफ 600. सो आई गॉट लाइक 560s में, सिंस साइंस का कट ऑफ थोड़ा कम जाता है. हाँ, तो आप पेपर देकर आते हो, भूल जाते हो आपने क्या किया. तो आफ्टर यू गिव योर एग्जाम समटाइम्स बाद, जब रिजल्ट आने वाला होता है उससे थोड़े दिन पहले, यू गेट अ रिस्पॉन्स शीट लाइक दिस. तो इसमें ना क्वेश्चंस होते हैं, जैसे बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन है दिस दिस, एंड इसमें ऑप्शंस दिए होते हैं कि क्या क्वेश्चन था. और उसके बाद ना इधर एक क्वेश्चन आईडी होती है एंड ऑप्शन आईडी होती है, एंड उसका स्टेटस होता है कि आपने आंसर किया या नहीं किया, और चोज एन ऑप्शन होता है, दैट व्हाट ऑप्शन डिड आई चूज. सो फॉर एग्जाम्पल इस वाले पेपर में किसी ने ऑप्शन 2 चूज़ किया, उसकी क्वेश्चन आईडी ये है, ऑप्शन आई क्वेश्चन आईडी ये है, एंड ऑप्शन आईडी दिस इज द ऑप्शन आईडी. ठीक है. तो होता क्या है कि एक ना शीट निकलती है जिसमें क्वेश्चन आईडी और ऑप्शन आईडी दिए होते हैं. तो क्वेश्चन आईडी से हमको ऑप्शन आईडी मैच करना होता है कि ये सही है कि नहीं. मतलब ऐसे वो डायरेक्टली नहीं बताते कि 1 का 2 है क्या, वो बताते हैं इस क्वेश्चन का, इस आईडी का ये आईडी ऑप्शन, ये ऑप्शन आईडी इज द करेक्ट आंसर. सो यू हैव टू मैच कि क्या मैंने सही किया है, एंड देन यू गिव योरसेल्फ नंबर. एंड ऐसा बहुत बार होता है कि प्रॉब्ली द शीट दैट दे रिलीज जिसमें क्वेश्चन आईडीज होता है वो गलत हो, तो यू कैन चेंज ऑल्सो, यू कैन पुट एन एप्लीकेशन. एंड हमारे टाइम पे इट वाज लाइक यू गिव 200 रुपीज़ पर ऑप्शन दैट यू वांट टू चेंज, और उसके बाद तुम्हारा आंसर चेंज हो जाता था अगर तुम्हारा सही है तो. ठीक है. सो आज हम इससे क्वेश्चन करेंगे. एंड इट्स, देखो ये जो ऑप्शन दिया है ना, चोजन ऑप्शन 2, इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट्स द राइट ऑप्शन, इट्स जस्ट द ऑप्शन दैट द पर्सन हैज अटेम्प्टेड, जिसने ये पेपर किया है. ठीक है. सो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. दिस ऑल्सो वी डिस्कस, दिस ऑल्सो, दिस 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 डन, दिस इज ऑल्सो डन, दिस इज ऑल्सो डन, ये भी हो गया, ये भी हो गया, दिस इज ऑल्सो डन, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया. हाँ, दिस इज ऑल्सो डन. ये भी किया था हमने. दिस ऑल्सो वी डिड. बट जस्ट फॉर द रिकॉर्ड एक बार इसका दोबारा आंसर डिस्कस कर देते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट वाज नॉट इन योर सिलेबस फॉर बोर्ड्स. So it says which of the following crop was made resistant to yellow mosaic virus and powdery mildew by mutation breeding, and what would be the answer for that? Yep, so the question for this is moong bean. Okay, moving on. This we did. Again, this is a question that is from your deleted part of the syllabus. तो एक बार ये भी बता दो. So the answer for this is sterilized plant part, genetically similar plants, meristem,
and explant. So मैंने as I've always said कि हमेशा start from the easiest thing and match the following. तो I see genetically similar plants and इसका would be soma clones. ठीक है, तो B का 3 है और मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है 4. So A is automatically an explant. Genetically similar plants is soma clones. Meristem C is a virus-free culture and somatic hybrid is a pomato. So this is the thing. Now, freshwater animals cannot live इसका था osmotic problems, है ना? And DNA and glycosidic linkage is present between. So obviously nitrogen आ रहा है तो it has to be, I mean N glycosidic आ रहा है तो it has to be a nitrogenous base, है ना? And glycosidic आ रहा है तो it has to be a pentose sugar or sugar. वो, so option 2 is the correct option. Yes, now this is a new question for which I'm gonna give you some time to solve because these the applications of biotechnology में है and हम लोग syllabus भी थोड़ा सा cover करने का try करेंगे एक एक topic करके. So question number 24, it says the process of RNA interference was used in tobacco plant to develop resistance against. So I'm gonna give you uh, 1 minute to think about this question or the answer. Right, so the answer for this is very easy. Direct book question है. The answer for this is 3, which is nematodes. है ना? Yeah, I hope that this is so clear. Now, the next question we have is match the following one. तो हमारे पास लिस्ट 1 में है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, बी पेडिग्री एनालिसिस, सी थैलेसीमिया, डी ट्राइसोमी ऑफ 21st chromosome, and in list 2 we have family tree over generation, blood disease, phenylketonuria, and Down syndrome. Giving you some time, 1 minute दे रही हूँ कि इसका आंसर बता दो.
राइट, तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं. It says A metabolic disorder. It's three phenylketonuria. B pedigree analysis is family tree over generations. To B का one है. Thalassemia is a blood disease and trisomy of 21st chromosome is Down syndrome. So we have A का three. A का three में we have two option one three four. Then we have B का pedigree analysis one. So it makes it three, option number three. ये select नहीं हो रहा, ये वाला option. Thalassemia is a blood disease, so C का 2 and D का 4. Trisomy of 21st chromosome, Down syndrome. I hope it's clear and you all agree with me. Now, another question on your screens. So it says question number 26. Paleontological evidences for evolution refers to 1. Development of embryo, 2. Homologous organs, 3. Fossils, and 4. Analogous organs. So it says paleontological evidences. Emphasis on that. Evolution किस किसको अच्छा लगता था पहले तो ये बताओ. I mean, I think that's the only chapter I did not like at all. Like I always felt like कि मैं क्यों याद रखूँ ये सब, क्या करूँगी मैं याद करके. देखो क्वेश्चन में ही आंसर है आपका. पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस मांगे हैं तो क्या हो सकता है. आपको क्या PBR 322 डिस्कस करने का मन है. I mean, I think that's the most comprehensive topic of biotech. वो करने से ज़्यादातर चीज़ें समझ आ जाती हैं. Yep. So paleontological evidence. So obviously fossils होगा. Development of embryo तो embryological evidence है, which is also an evidence जो book में दिया हुआ है, book में mention है. चलो मूविंग ऑन, एक और क्वेश्चन करते हैं उसके बाद हम बायोटेक पढ़ेंगे. So the question says, question number 27. Which of the following is not a nitrogen fixing microorganism? The options for which are Azotobacter, Oscillatoria, Acetobacter, and Nostoc.
गुड क्वेश्चन, ये बताओ। इसके ना एक्चुअली नाम नहीं है। जो 1 to 3 वर्ड दिए हुए हैं ना, उनके नाम में ही है कि कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, बट स्टिल पीपल कैन अटेम्प्ट दिस रॉन्ग. थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन एंड टेल मी क्या होना चाहिए इसका आंसर. ओके, सो पहले मैं इसका आंसर बताती हूँ, फिर मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगी. सो दिस पर्सन, आप इसकी रिस्पॉन्स शीट देख सकते हो कि इसने ना ऑप्शन 2 आंसर किया है, which is oscillatoria, which might seem like a correct option क्योंकि acetobacter और acetobacter में बहुत similarities है. लेकिन if you see it very clearly, तो आपको ना क्लिक होगा कि acetobacter acetate is used in the production of acetic acid. ठीक है, acetic acid, acetic acid, acetobacter, है ना, ये तो आपका acetic acid बना रहा है. एंड एसिडोबैक्टर, ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक, ये सारे आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स हैं. ये जो है जो ऊपर एसिडोबैक्टर है, दिस इज अपना फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजन फिक्स करता है. एंड जो ऑसिलेटोरिया और नॉस्टॉक है, these are cyanobacteria which are available in the aquatic or terrestrial habitat, and then they fix nitrogen. So it's like that. I hope it's clear to you. चलो, okay, last question and then we do biotech. हाँ, तो I'll read the question for you. You guys can think of the answer. Till then मैं biotech वाला chapter खोलती हूँ laptop पे. Right. So question number 28. Single step large mutation leading to speciation is also called 1. Founder effect, 2. Sortation, 3. Branching descent, and 4. Natural selection. Think about this question and answer.
चलो मैं इसका आंसर बताती हूँ। द आंसर फॉर दिस इज, एक सेकेंड, ये, हाँ सॉरी, द आंसर फॉर दिस इज सॉल्टेशन. So, a single step large mutation leading to speciation is known as saltation, right? So, with that question, option number two, I hope you आप लोगों को सही आएगा. And with that, let's start biotech now. Honestly, बायोटेक का जो चैप्टर है ना, ये इतना कंफ्यूजिंग वे में दिया है एनसीईआरटी में कि दिमाग खराब हो जाता है ऐसे पढ़ते पढ़ते, है ना. चलो भी स्टार्ट. We'll start in 2 minutes. चलो तो स्टार्ट करते हैं. सो अभी मैं लैपटॉप पे हूँ एंड आई डोंट थिंक सो इट वुड बी पॉसिबल फॉर मी टू राइट ऑन द स्क्रीन. ऑप्शन नहीं आ रहा है ऐसा कुछ भी, एंड आई नो इट वुड बी बेटर अगर ऐसा होता. एक सेकेंड, लेट मी ट्राई. उसी को ट्राई करने के लिए मैंने आप लोगों से 2 मिनट मांगे थे. एंड हाँ, इतना अच्छा ड्राइंग ऑप्शन तो नहीं आया बट आ गया है. एक सेकेंड, मैं अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर करती हूँ. यस, डन. हाँ, अब डिस्कस करते हैं. एज यू कैन सी इसका ड्राइंग टूल चल रहा है तो ये चल जाएगा. हाँ जी, तो लेट्स स्टार्ट बायोटेक्नोलॉजी. एंड ये एक चीज़ है विच आई वॉन्ट यू गाइस टू रीड, क्योंकि मुझे पता तुम लोगों ने कभी नहीं पढ़ी होगी. बट यहाँ पे ना एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम दिया है विच इज़ हर्बर्ट बॉयर. ठीक है, हर्बर्ट बॉयर एंड स्टैनली कोहेन वर द फर्स्ट, दे वर द वेरी फर्स्ट पीपल जिन्होंने बायोटेक में कुछ किया
किया था एंड दे मेड फर्स्ट recombinant DNA with a plasmid of Salmonella typhi and they transformed into E. coli, a cell which is closely related to Salmonella typhi. ठीक है, and I want you guys to read from here. Herbert Boyer was born in, ये सब नहीं, but यहाँ से पढ़ो कि बॉयर ने क्या क्या किया था, बिकॉज दैट कैन कम एज अ क्वेश्चन कि बॉयर ने क्या किया था, है ना। स्टिकी एंड्स की जब हम बात करते हैं तो स्टिकी एंड्स क्या होते हैं, ठीक है। मैं और थोड़ा ट्राई करती हूँ, हाँ, इफ दिस फिट्स द स्क्रीन। अच्छा नहीं, मेरा वीडियो से ब्लॉक कर देगा शायद, थोड़ा सा ऐसे लिखना पड़ेगा। कलर कलर चेंज करती हूँ हाईलाइटर को सो दैट इट्स विजिबल टू यू गाइस। यस, स्टिकी एंड्स की जब हम बात करते हैं, व्हाट आर स्टिकी एंड्स, है ना। एंड प्लास्मिड्स, व्हाट आर प्लास्मिड्स, स्मॉल रिंगलेट्स ऑफ डीएनए। देखो हमें बुक में चैप्टर के अंदर तो दिया ही है कि प्लास्मिड जो होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, बट यहाँ पे देखो दूसरा टर्म भी दिया है विच इज स्मॉल रिंगलेट्स ऑफ डीएनए एंड एक्चुअली क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस पार्ट of the chapter can also be can also come in the exam, ठीक है। एंड व्हाट क्लासमेट्स में क्या लिखा है बताओ, ये तो नई चीज़ है ऑनेस्टली तुम लोगों के लिए होगी, है ना। सो प्लास्मिड्स, small ringlets of DNA called plasmids which float about freely in the cytoplasm of certain bacterial cell and replicate independently from coding strands of DNA. Very, very important line, as you can see. बताओ honestly, did you ever read this definition? Anyway, combining this process with that of DNA splicing, I hope you all know DNA splicing क्या होता है, enabled Boyer and Cohen to recombine segments of DNA in desired configurations and insert the DNA in bacterial cell, which could then act as a manufacturing plants for specific proteins. Manufacturing plants for specific proteins. अब ऐसे ऐसे words आ गए एग्जाम में तो ये मत कहना कि कहाँ पे थे, because it's there in the book. This big breakthrough was the basis upon which the discipline of biotechnology was founded. ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, तो इसमें इम्पॉर्टेंट है एक तो टेस्ट ट्यूब बेबी वाली जो टेक्नोलॉजी है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये भी हम लाइक बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट मान सकते हैं। देन देयर इज दिस डेफिनेशन ऑफ biotechnology given by the European Federation of Biotechnology EFB, which is very important, ठीक है। So the integration of natural sciences and organisms, cells, parts thereof and molecular analogues for products and services, ठीक है। Now principles of biotech में we have two techniques, genetic engineering which are techniques to alter the chemistry of the genetic material जैसे DNA या RNA, ठीक है। as the name suggests genetic engineering मतलब genes को जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई करना। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए और आरएनए वाले मॉडिफाई करना, तो ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू प्रोड्यूस दीज इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड दस चेंज द phenotype ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। अगर हम जीन चेंज कर देंगे, अगर हम जीनोटाइप चेंज कर देंगे तो फिनोटाइप अपने आप चेंज हो जाएगा, है ना। अगर हम अगर हम जीनोटाइप चेंज कर देंगे तो फिनोटाइप अपने आप चेंज हो जाएगा, है ना। दैट्स द फॉरगिवन। हाँ, now second
Second is maintenance of sterile, which is microbial contamination free ambience in chemical engineering processes to enable growth of only the desired microbe eukaryotic cell in large quantities for manufacture of biotechnology products like antibiotics, vaccines and enzymes. इसको हम डाउनस्ट्रीमिंग या अपस्ट्रीमिंग वाला जो प्रोसेस है जो आगे एंड ऑफ द चैप्टर में आता है वो भी कहते हैं, जो तुमने पढ़ा होगा शायद, है ना? So now why is there a need for biotechnology? Because traditional hybridization procedures जो होते हैं कि हम जेनेटिक्स जो मेंडल ने किया था कि हम एक हाइब्रिड बनाने के लिए 2 जीन्स ले अलग अलग आइसोलेट करें और उन्हें मिला दें, तो इसमें जो मैंने जीन ली ये एक ऑर्गेनिज्म है, वाओ क्या बनाई, ये एक दूसरा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसके पास मान लो ये वाली जीन है जो हमें चाहिए और इसके पास मान लो ये वाली जीन है जो हमें चाहिए और इसके पास मान लो ये एक ऐसी जीन है जो हमें चाहिए। अब हम ये और ये कंबाइन कर रहे हैं तो हमारे पास ये और ये वाली जीन आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास ये और ये वाली जीन भी तो आ रही है जो हमें नहीं चाहिए, है ना? इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज विद दिस यू कैन ओनली गेट द डिजायर्ड जीन दैट यू वांट एंड नॉट द अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम इसको कहते हैं, यूज ऑफ जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफर हैपेंस, है ना? एंड देयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द क्रोमोसोम विच इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। हमने डीएनए वाला चैप्टर पढ़ा था तो हमें पता है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है। तो जैसे ये एक डीएनए की स्ट्रैंड है ना? अब इस पार्ट से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी तो मेरे को जीन इसके आगे लगाना पड़ेगा ताकि वो रेप्लिकेट हो। अगर मैंने इसके पीछे लगा दिया तो वो रेप्लिकेट ही नहीं होगा क्योंकि रेप्लिकेशन तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। सो दिस इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का सिग्निफिकेंस। Now we have, so it's written origin of replication which is responsible for initiating replication. है ना? So for multiplication of any alien piece of DNA in an organism, it needs to be part of the chromosome which has a specific sequence called this. ठीक है? So now let's see construction of first recombinant DNA. तो मैंने पहले बताया था कि it was Herbert Boyer and Stanley Cohen. Right. Also, this reminds me that there are almost 30 days for your CUT left and 16 chapters हैं शायद total. तो अगर हम try करें कि जो मुश्किल वाले chapters हैं उन्हें 2 days पर session ले, मतलब 2 days पर chapter ले और जो easy वाले उन्हें 1 day ले, तो आपका हो जाएगा prep 5 दिन पहले ही खत्म हो जाएगा सारा, क्योंकि easy वाले को हम 1 day ले रहे हैं. So the construction of first recombinant DNA emerged from the possibility of linking a gene encoding antibiotic resistance with a native plasmid which is autonomously replicating circular extra chromosomal DNA. अब I want you guys to do one thing. तुम ना एक पेज लो और उसमें लिखो प्लास्मिड, ठीक है? और प्लास्मिड जब तुम लिख रहे हो तो उसके बारे में पहला जो पहले पेज में लिखा हुआ था वो भी लिखो एंड जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो भी लिखो एंड आगे जो लिखा होगा लाइक दैट, सॉरी कुछ शोर हो रहा था बाहर, एनीवे, हाँ, so it happened on the native plasmid of Salmonella typhimurium, ठीक है? And it happened in 1972 and cutting of DNA to a specific location, आपको पता होगा molecular scissors की उससे होता है ना? molecular scissors are what? Restriction enzymes. Restriction enzyme के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे. And the cut piece of DNA was then linked to the plasmid DNA and these plasmid acts as a vector. There is an ori which is origin of replication and in the same way plasmid vector होता है तो it is then transferred to the competent cell, ठीक है? And
इसको फिर हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम इशर्शिया कोलाई में इन लोगों ने डाला, अ बैक्टीरियम विच इज क्लोजली रिलेटेड टू सैल्मोनेला टाइफिन। है ना, एंड इट हैपेंड क्लोनिंग वेक्टर की वजह से। ठीक है, सो हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए तीन बेसिक स्टेप है। वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए, सेकंड इज इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, एंड थ्री इज मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। देन वी हैव रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। सो हमारे पास ना दो तरीके की होती है, एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है और रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस होता है। But as of now, let's talk about restriction exonucleus. Um, okay, so 9:03 हो गया है, तो this is something that we'll do tomorrow. So we have restriction enzymes and restriction enzymes क्या होते हैं उससे हम कल स्टार्ट करेंगे, and I'll cover पूरा बायोटेक का चैप्टर कल and with questions PYQs जो हम डिस्कस कर रहे थे. So with that being said, thank you so much for joining and thank you so much for being patient, and rest of the part we'll cover tomorrow, and thank you, and consider going to the exam factors page and उनका वो देखना आप mock test series and crash course which is available, so you can contact them, they'll contact you back, and उसके बाद you can see कि क्या क्या है कोर्स में.